दर्शकों ने पूछा है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमने हमारा पेज है, अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या किस तरह बढ़ाई जा सकती है? जी ज्योतिर्मय जी। Yeah, very good question. Because most of these business entrepreneurs, they want to do branding, they want to become famous. Basically, sales बढ़ाने की बात है, revenue होनी चाहिए. Whatever product or service you are selling, it should be seen by the people. That is the purpose of social media. है ना? दर्शकों से विनती है जो जूम पे है अपना Yeah. So what I would suggest is the following. After you have created your Facebook page, I'm not talking about ID, the Facebook page, and Instagram or Twitter, LinkedIn page, etc. You make your URL professional. I'm telling you the steps, you can note down. This video is available on Facebook page also. Later on Jyoti Social, you can watch. Make your URL professional. You can edit the URL because when you register, you get a generic name. That means a string of numbers. You need to edit that. वो हटा के एक प्रोफेशनल अच्छे से नाम बना लो. और वो URL जैसे डोमेन नेम URL यूनिक होता है, वैसे ये भी यूनिक हो जाएगा. Next step, copy that URL and share it with your prospects, with your people whom you know on WhatsApp group. Next, put it in the email footer and cross posting. Means Facebook का URL आप LinkedIn में आपके कनेक्शन को बोलो, LinkedIn का URL Facebook में, and so on so forth. In short, the first thing you need to do is make sure people get connected with you. At least the known people, maybe friends, maybe well-wishers, maybe influencers, they should get connected. On Facebook page, you need 2000 likes to get some kind of traction. So here, the next thing comes is about the paid marketing. You need both. You need organic marketing, that is free, and inorganic marketing, that is paid. दोनों करना है. Third is influencer marketing. Like we have this NetMitra channel. We can promote your company, your product or service, because this NetMitra we are doing every week. So people will come to know. The last point is very important. Please make a note that you share educative information, not only the advertisement. Show off your expertise by joining groups. When you join various groups, you are in position to show off, showcase that you are expert in your profession or industry. All these things put together, you can have much better followers, connection, and at end of the day, sell बढ़ना चाहिए, इंक्वायरी आनी चाहिए, लीड जनरेशन होना चाहिए. तो इसके लिए ब्रांडिंग करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं अवेलेबल है. क्रांति, यस, हाँ जी, आपका क्रांति माइक म्यूट हुआ है. यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये फॉलोअर्स की संख्या किस तरह बढ़ाई जाए, ये सबके जहन में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैंने सब कुछ तो अभी मेरी तैयारी हो गई है, लेकिन फॉलोअर्स उतने बढ़ते नहीं है. राइट. छोटी छोटी डिटेल बातें हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो हम कैसे सीखे? देखिए, ये अभी 15 मिनट के प्रोग्राम में तो मैं सभी बातें नहीं बता सकता, इसलिए हमने 1 महीने का इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम तय किया है. ऑनलाइन 1 मंथ कोर्स कीजिए. एवरी डे यू लर्न समथिंग.
तो हमारा ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिवस ये प्रोग्राम रहता है in the जी evening. So you enroll for this course to learn detail about all this platform. We will learn about Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube. There are so many techniques you should know. तो ये 1 महीने का कोर्स जरूर शेयर करो और वहां पर एनरोल करो। जी क्रांति जी, ये छोटी छोटी डिटेल बातें और जो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, तो इसलिए ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फैकल्टी कौन है? हाँ देखिए, फैकल्टी मैं हूँ, आई एम टीचिंग पर्सनली, और देखिए वी आर आल्सो एक्सपांडिंग, सो आई एम आल्सो लुकिंग फॉर फैकल्टी. इफ समवन वांट्स टू जॉइन विथ मी, आर वेलकम, and we can join hands and collaborate. Yes, Kranti, but right now I am teaching personally. Yeah. मैंने खुद ये कोर्स कल ही से शुरू किया है, जी. तो मैं दर्शकों को दरख्वास्त करती हूँ कि बहुत बहुत उपयुक्त ऐसा ये कोर्स है, और आप जब चाहे तब से ये कोर्स शुरू कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, दर्शकों, सोशल मीडिया अभी अपने जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। सुबह जब नींद से आंखें खुलती है, तब से जो मोबाइल हाथ में आता है, तो वो रात को हम सोते सोते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है। तो Right. क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लोग इतना समय व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया के साथ, तो उसको नापने के लिए कुछ ऐप है क्या? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि टुडे वी हैव सीन दैट पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड. मतलब पहले समझो मुश्किल से दिन में एक 2 मिनट देखते थे, या वीक में 5 मिनट. नाउ एवरी डे 20-25 मिनट लोग सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं. तो आपका प्रश्न है, इज देयर एनी ऐप और एनीथिंग विच वी कैन मेजर? जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि फेसबुक में बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनाई गई है. इन फेसबुक it is possible for us to measure, and in Instagram also. So if you go to Facebook की ऐप में आपको एक वहां पर टाइमर का, एक्टिविटी का सेटिंग मिलेगा. लेट मी शो यू. सी हियर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. यहां पर आपको आपने फेसबुक पे कितना टाइम दिया है उसका चार्ट मिल जाता है. और यू कैन ऑल्सो सेट अ लिमिट. सपोज इफ यू से that if I spend more than 10 minutes on Facebook, it will tell you that 10 minutes is over, you switch off the Facebook. This kind of facility is available on your Facebook app, on your mobile. You can go in the setting, and in the setting you will find this timing. That way you can limit your time per day. Similarly, on Instagram also such timer is available. Now almost all social media has started giving this kind of facility to tell you how many minutes you are spending. How many? So here it shows say 22 minutes daily एवरेज आपका इंस्टाग्राम में जा रहा है. कौन से दिन में आपने ज्यादा यूज किया है, वगैरह वगैरह. डेली टाइमर आप रख सकते हो. बाय पुटिंग डेली टाइमर एंड लिमिट, it will tell you if you have exceeded, then you, because many times when you are using WhatsApp and all that thing, as you said correctly, सुबह को उठ के ही सीधा WhatsApp शुरू हो जाता है. तो ये ना हो, ये बहुत जरूरी है. It's very important that you limit your time on social media and use this time limit option in the apps. Kranti, before we go ahead, I had a message from architect Mandar. He is here with us. Mandar, would you like to ask the question if you are there now? Or I can repeat his question. He had tell me
As nowadays, I will repeat his question. As nowadays in pandemic situation, market economy is getting more and more disturbed. How can I make my growth through digital marketing? This is the point he has asked. I'm glad this is important question because everybody is facing this challenge in pandemic time. And the first thing is go digital. Embrace this technology with both hands. Don't be afraid. थोड़ा सीख लेना चाहिए. As I said, हम एक महीने का कोर्स है, 3 days in a week, Monday, Wednesday, Friday in the evening, 1 hour. So you learn, understand, and then grow your business. Some architects have already taken my course and they are getting benefited. Another thing about digital marketing is you make your profile a proper profile with your photo and name. Many people have seen, because this is a cultural change. They try to hide their face. They don't want to show their face. तो ब्रांडिंग नहीं होगा. तो फेस दिखाना जरूरी है. Don't be afraid of showing your face on social media. If you are talking about business marketing, if it is personal use like housewife or students, then it's a different matter. But if you talk about business marketing, then don't feel shy. Make a good profile photo and fine-tune your profile data, especially on LinkedIn, etc. Give more details. Yes, Kranti. जी ज्योतिंद्र जी, हमारे पास अभी सिर्फ 1 मिनट है, तो मैं एक आखिरी सवाल पूछती हूँ. लिस्ट तो बहुत लंबी है, शायद से अगले गुरुवार हम वो कंटिन्यू कर पाएंगे. तो ये जो लोगों का बढ़ता हुआ एडिक्शन है, तो कोई टूल है जिसे हम जान सकते हैं कि ये सोशल मीडिया की भरमार से कैसे मैनेज करें हम? Yeah, so that is why I said don't overboard it. मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. और ये जो ऐप में टाइमर है, it's a good tool to measure and limit your social media use. ये जो बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं, वो किस तरह से हम उससे कैसे वेरी गुड पॉइंट. तो वहां पर भी नोटिफिकेशन के लिए, ईमेल के लिए भी ऑप्शन है. आप सेटिंग में बोल दो कि इतने सारे ईमेल नहीं चाहिए, या कोई ग्रुप के ईमेल बहुत आते हैं वो नहीं चाहिए. So there are half a dozen settings pertaining to email notification. You can stop that, and so that you don't get disturbed. जी जी. और what about Instagram? Instagram का भी notification का वहां पर setting है. If you don't want, the Instagram notification will not come, email will not come. तो आपको email द्वारा notification चाहिए या online notification चाहिए? When you are in Instagram, in the notification tab, you can decide, and accordingly the particular social media will send you the notification. Otherwise it becomes disturbing. Yes, Kranti. जी ज्योतिंद्र जी, समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले गुरुवार हम कंटिन्यू कर पाएंगे. जरूर कर पाएंगे. Before you close, I just wanted to show you one मैं अभी आपसे वही दरख्वास्त करना चाहती थी कि कुछ हंसते हुए अलविदा कहेंगे. ये एक कार्टून मैंने देखा है, डीएक्सिसन. तो वो पूछ रही है अल्कोहल या ड्रग, वो बोलता है व्हाट्सएप. तो ये हालत हो गए हैं आज. जी जी, उनकी आंखें हमें दिख रही है. या और एडिक्शन रिकवरी सेंटर में भी देखो तो वहां पर फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसका ही एडिक्शन के लिए लोग आते हैं, और ये होना नहीं चाहिए. यस, क्रांति. So let me say this is available on Facebook. Every week we are meeting and we will continue the discussion like this. So I think I will say bye, and it was really nice. बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले गुरुवार फिर से मिलते हैं. तो दर्शकों, ये थे ज्योतिंद्र झवेरी. हर गुरुवार 9:30 नेट मित्र चैनल देखते रहिए. आज का डिस्कशन हम अगले गुरुवार कंटिन्यू